इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। GPAT रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो MCQ है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से है और ये इम्पॉर्टेंट MCQ है GPAT के लिए। तो और ये पार्ट 2 है। ओके, तो पार्ट 1 जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे और पार्ट 2 हम देखेंगे। चलिए 1 बाय 1। 31 क्वेश्चन नंबर 30 जो क्वेश्चन 30 तक जो है पार्ट 1 में है और 31 से स्टार्ट है पार्ट 2 में। ओके, चलिए देखते हैं। Sweating is inhibited by A. Atropine, B. Phenothiazine, C. Scopolamine, and D. All of above. Which one answer? The answer is D. All of above. अब इसमें देखेंगे एट्रोपिन क्या होता है। एट्रोपिन जो होता है इज अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीट सिम्टम्स जो है वो लो हार्ट रेट का ब्रेडिकार्डिया। लो हार्ट रेट that means bradycardia, reduce salivation and bronchial secretion before surgery, or as an antidote for overdose of cholinergic drug or mushroom poisoning, that is called atropine. Okay, इसी को हम यूज़ करके और जो सिम्टम्स है वो लो हार्ट रेट को हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिनोथायजिन। जो फिनोथायजिन क्या होता है, आर न्यूरोलेप्टिक एजेंट दैट इफेक्ट अ वैरायटी ऑफ रिसेप्टर इंक्लूडिंग डोपामिर्जेनिक रिसेप्टर साइट। स्कोपोलाइन क्या होता है, ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, हाउस्किन, इज अ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस। किसका सिकनेस, किसका ट्रीटमेंट करता है, मोशन सिकनेस को, एंड पोस्ट ऑपरेटिव नाउजिया एंड वोमिटिंग को भी ये ट्रीट करता है। ओके, नेक्स्ट इज 32 क्वेश्चन नंबर। बीटा agonist used in bronchial asthma exert action by A. blocking beta 1 receptor, B. blocking beta 2 receptor, C. stimulating beta 1 receptor, या D. stimulating beta 2 receptor. Which one answer? The answer is D. stimulating beta 2 receptor. Okay, next is 33 question number. Which of the following agent irreversibly bond with acetylcholinesterase? A. Dispropyl fluorophosphate, B. ecothiopate, C. both A and B, and D. none of above. Which one answer? The answer is C. both A and B. यानी कि A is dispropyl fluorophosphate and B is ecothiopate. Okay, next is 34 question number. Alcuronium is a semi-synthetic derivative with similar properties of A. galamine, B. pancreatic, and C. acetylcholine, and D. D-tubocurarine. Which one answer? The answer is D. D-tubocurarine. Okay, next is 35 question number. Which of the following is directly acting in sympathomimetic agent? A. Ephedrine, B. amphetamine, C. dopamine, and D. all of the above. Which one answer? The answer is C. dopamine. Dopamine क्या होता है? Is just chemical found naturally in the human body. It is a neurotransmitter, meaning it send signal from the body to the brain, that is called dopamine. Okay, 36 question number. Antidote of organo phosphorus poisoning is physostigmine, B. Pralidoxime, C. Neomycin, and D. tubocurarine. Which one answer? The answer is B. Pralidoxime. Pralidoxime क्या होता है? इज एन एंटीडोट। ये क्या है? एंटीडोट है टू ऑर्गेनो फॉस्फेट पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। ऑर्गेनो फॉस्फेट binds to the acidic site of acetylcholinesterase which result initially in reversible inactivation of enzyme, that is called Pralidoxime. Okay, next is 37 question number. Action of D-tubocurarine is A. competitive blockage of muscarinic receptor, B. competitive blockade of nicotinic receptor, and C.
irreversible blockage of muscarinic receptor, and D is none of the above. Which one answer? The answer is B, competitive blockage of nicotinic receptor. Okay. Next is 38 question number. Gingival hyperplasia is an oral condition possible in using a phenobarbital, B phenytoin, and C is pentobarbital, and D is valproic acid. Which one answer? The answer is B phenytoin. Phenytoin जो होता है PHT is the short form, sold under the brand name of Dilantin. Among other is anti-seizure medication. It is useful for the prevention of tonic-clonic seizure and focal seizure, but not absence of seizure. ओके इसको हम यूज़ करके ट्रीट प्रिवेंशन कर सकते हैं किसका? टॉनिक क्लोनिक सीजर को और फोकल सीजर्स को. ओके. नेक्स्ट इज 39 क्वेश्चन नंबर. विच इज़ द फ्लोइंग एजेंट इज द cholinesterase re-activator? A. Pilocarpine, B. Pralidoxime, C. Neomycin, and D. phosphostigmine. Which one answer? The answer is B. Pralidoxime. Pralidoxime क्या होता है? इज एन एंटीडोट. ये क्या है? एंटीडोट. ये हम आपको पीछे बता चुके हैं. ओके फिर बताते हैं. एंटीडोट टू ऑर्गेनो फॉस्फेट पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स. ऑर्गेनो फॉस्फेट बाइंड्स टू स्टैटिक साइट ऑफ acetylcholinesterase, which results initially in reversible inactivation of the enzyme. Okay. Next is 40 question number. Which of the following drug inhibits the acetylcholine synthesis? A. Neomycin, B. Vasomical, C. Botulinum toxin, and D is atropine. Which one answer? The answer is B. Vasomical. वैसामिकल क्या होता है? इज एन एक्सपेरिमेंटल ड्रग. ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल ड्रग है. एक्टिंग प्री सिनेप्टिकली बाय इनहिबिटिंग एसिटाइलकोलिन. ACH को हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलकोलिन अपटेक इनटू सिनेप्टिक वेसल्स एंड रिड्यूसिंग इट रिलीज. दैट इज कॉल्ड वैसामिकल. ओके ये एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है. ओके. नेक्स्ट इज 41 क्वेश्चन नंबर. ट्रैकीफैलेसिस is an unwanted effect of A. methohexamine, B. methylphenidate, C. ephedrine, and D. methamphetamine. Methamphetamine. Okay. The answer is C. ephedrine. ephedrine क्या होता है? is an prescription medicine used to treat symptoms. इसका जो होता है low blood pressure during anesthesia. Anesthesia क्या बोलते हैं? hypotension. Okay. Next is 42 question number. Activation of alpha 2 receptor in a pancreatic islet causes a suppression of insulin secretion. B. Stimulation of insulin release. C. Suppression of glucagon secretion, and D is none of the above. Which one answer? The answer is A. Suppression of insulin secretion. Okay. Next is 43 question number. Darifenacin is a M1 antagonist, M2 antagonist, C. M3 agonist, and D. M3 antagonist. Which one answer? The answer is D. M3 antagonist. Okay. Next is 44 question number. Which of the following drugs does not cross the blood-brain barrier? A. phosphostigmine, B. neostigmine, C. atropine, D. all of the above. Which one answer? The answer is B. neostigmine. Neostigmine क्या होता है? Is a medication used to treat myasthenia gravis, Ogilvie syndrome, and urinary retention without the presence of a blockage. इसका जो है ये यूज़ करके न्यूस्टिगमिन एक मेडिकेशन है जो कि ट्रीट करता है ये इसका यूरिनरी रिटेंशंस को, ओलिग्लेविस सिंड्रोम को और मैस्थेनिया ग्रेविस को. ओके. नेक्स्ट इज 45 क्वेश्चन नंबर. ड्रग ऑफ द चॉइस in the treatment of cardiogenic shock is isoproterenol, B. epinephrine, and C. dopamine, A. D. all of above. Which one answer? The answer is dopamine. Dopamine क्या होता है? is a chemical naturally in the human body. It is the neurotransmitter, meaning it sends signal to from body to the brain, that is called dopamine. Okay. Next is 46 question number. Which of the following is muscle relaxant
has peripheral action? A. Diazepam, B. Mefenizum, C. D-tubocurarine, and D. Orphenadrine. Which one answer? The answer is D. D-tubocurarine. Tubocurarine जो होता है इज अ टॉक्सिक अल्काइड होता है, हिस्टोरिकली नोन एज, इसको बोलते हैं यूज एरो पॉइजन. ओके, नेक्स्ट इज 47 क्वेश्चन नंबर. पिलोकार्बिन इज द बेस्ट यूज इन कॉन्जाइटल ग्लाइकोमा में यूज होता है, या ओपन ग्लाइकोमा, या सी सेकेंडरी ग्लाइकोमा, या डी ऑल ऑफ द अबव. विच वन आंसर? द आंसर इज बी, ओपन एंगल ग्लाइकोमा. ये क्या होता है? इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्म of the disease. The drainage angle formed by the cornea and iris remains open, but the trabecular meshwork is partially blocked. That is called open angle glaucoma. Okay. Next is 48 question number. Timolol reduce the intraocular pressure by which mechanism of action? A. Muscarinic agonist, B. Acetylcholinesterase, C. Carbonic anhydrase inhibitor, D. beta adrenoreceptor antagonist. Which one answer? The answer is D. beta adrenoreceptor agonist. ये क्या होता है? Are one of the most widely used classes of drug clinical practice and are currently used in the management of hypertension, ischemic heart disease, heart failure, anxiety, tremor, and migraine and glaucoma. That is called, ये क्या है? क्लास है. ओके, इसका बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को. ओके, नेक्स्ट 49 क्वेश्चन नंबर. फॉर ग्लाइकोजिनोलिसिस इन लिवर वन ऑफ द फ्लोइंग एड्रीनो रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल. ए. अल्फा 1 रिसेप्टर, बी. अल्फा 2 रिसेप्टर, सी. बीटा 1 रिसेप्टर, या डी. बीटा 2 रिसेप्टर. विच वन आंसर? The answer is A. alpha 1 receptor. Okay. Next is 50 question number. Cardiac effect of epinephrine includes all except A. Act on beta receptor. Act on B. Beta receptor or myocardium. B. Induced cardiac arrhythmias are blocked by propanol. C. Prolonged refractory period of AB nodes. D. Decrease the amplitude of the T valves of ECG. Which one answer? The answer is C. Prolonged refractory period of AB nodes. Okay. Next is 51 question number. Serious unwanted effect of epinephrine is A. Respiratory difficulty, B. Palpitation, and C is cerebral hemorrhage, and D is tumor. Which one answer? The answer is C. सेरेब्रल हेमरेज. सेरेब्रल हेमरेज क्या होता है? इज एन अनकंट्रोल ब्लीडिंग इन ब्रेन. ब्रेन के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है. ओके, ब्रेन के अंदर इट कंट्रोल ही नहीं होता है. इट कैन अकर्स द फ्रॉम इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ लीकी एंड ब्रस्ट ब्लड वेसल. ब्लड वेसल जो होते हैं वो फट जाते हैं अंदर में और वो अनकंट्रोल हो जाते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होते हैं. उसको क्या बोलते हैं? सेरेब्रल हेमरेज. ओके, नेक्स्ट इज 52 क्वेश्चन नंबर. ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस इज A. atropine, B. scopolamine, C. carbamazepine, and D. metoclopramide. Which one answer? The answer is B. scopolamine. Scopolamine क्या होता है? Is also known as hyoscine. इसको हम क्या बोलते हैं? hyoscine is a medication treatment जो होता है इसका मोशन सिकनेस को ट्रीट करता है, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया को एंड वॉमिटिंग को. ओके, नेक्स्ट इज 53 question number. In belladonna poisoning, convulsion can be controlled by A. Paraldehyde, B. phenytoin, and C is diazepam, and D is carbamazepine. Okay, which one answer? The answer is C. diazepam. diazepam क्या होता है? diazepam क्या होता है? Is used to treat anxiety. एनजाइटी यूज मतलब इस डायजेपम को हम यूज करके एनजाइटी को ट्रीट कर सकते हैं. अल्कोहल विड्रॉल सीजर्स. इट इज़ यूज टू रिलीफ मसल स्पम्स एंड टू प्रोवाइड सीडेशन बिफोर मेडिकेशन प्रोसीजर. ओके, नेक्स्ट इज 54 क्वेश्चन नंबर. एट्रोपिन आर यूज प्रियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जनरल एनेस्थेटिक एजेंट ड्यू टू because it
inhibition salivation and secretion of the respiratory tract, and B is inhibit GIT motility. GIT means gastrointestinal tract motility, and C is prevent mysis, and D is causes skeletal muscle relaxation. Which one answer? The answer is inhibition, salivation and secretion of the respiratory tracts. Okay. Next is 55 question number. Measure adverse effect of cholinidin is bradycardia. A is bradycardia, B is tachycardia, C is sexual dysfunctions, and D is dry mouth. Which one answer? The answer is D, dry mouth. Okay. 56 question number is next. 56 question number. Ganglionic blocking agent may cause all of the following except A, mydriasis, B, loss of accommodation, C is reduced sweating, is reduced D is inhibit excitation and ejaculations. Which one answer? The answer is D, inhibition, accretion and equation. Okay, ejaculations. Okay. Next, thank you for watching my channel. Subscribe my channel, share all pharmacy students. Okay, तब तक के लिए बाय. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. ओके.